Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Benchmark domestic equity indices rise for the third straight session. Sensex closes above 77,000 mark. Nifty gains over 100 points. India's total exports register a growth of 5.5% to hit nearly $821 billion in the last fiscal. And global gold prices surpass the $3,300 mark for the first time. Gold prices in India breaches the historic 95,000 rupees mark. घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे सत्र में जारी रही तेजी। सेंसेक्स 77,000 के स्तर से ऊपर उठकर हुआ बंद। निफ्टी 100 अंक से अधिक उछला। पिछले वित्त वर्ष में देश के सकल निर्यात में 5.5% की वृद्धि हुई। 821 अरब डॉलर के नजदीक पहुंचा निर्यात। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य पहली बार $3,300 प्रति औंस के ऊपर पहुंचा। भारतीय बाजारों में भी सोने का मूल्य 95,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पहली बार पार कर ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे सत्र में आज लिवाली तेज रही। तेल और गैस, मीडिया तथा बैंकिंग सेक्टर की अगुवाई में यह तेजी आगे बढ़ी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 309 अंक यानी 0.4% की बढ़त लेकर 77,044 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 109 अंक यानी 0.47% उछाल के साथ 23,437 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.6% की वृद्धि हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.9% लाभ के साथ बंद हुआ। Benchmark domestic equity indices today ended in positive territory for the third straight session, led by gains in oil and gas, media and the banking sectors. Both the indices offset mixed global cues, pairing intraday losses to register gains during the second half of trade. The 30-share index of the BSE Sensex rose 309 points, 0.4% to close at 77,044. The NSE Nifty 50 advanced 109 points or 0.47% to settle at 23,437. The broader market indices in the BSE outperformed the frontline indices. The mid-cap index increased over 0.6% and the small-cap index added over 0.9%. In the Sensex, PAC 18 out of the 30 companies ended in positive territory. Among the top gainers, IndusInd Bank rallied over 7.1%, Axis Bank gained over 4.2% and Adani Ports added 1.8%. Conversely, among the top laggards, Maruti decreased 1.5%, Infosys lost 1% and Tata Motors dropped over 0.9%. In the sectoral indices, the BSE 17 out of the 21 sectors registered gains. Among the top gainers, oil and gas rose over 1.7%, BankX advanced over 1.4% and energy added more than 1.2%. In the top laggards, autos tipped almost 0.4%, while IT, capital goods as well as focused IT ended 0.7% down. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,636 companies advanced, 1,309 companies declined, and 133 companies remain unchanged. At the NSE, 54 companies hit their 52-week high, while 11 hit their 52-week low.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 9 पैसे मजबूत हुआ, 85 रुपए 68 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 99.58 पर चल रहा था। डॉक्टर शर्मा, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। शुरुआत में मजबूत दिख रहा था, फिर गिरावट हुई, फिर उसके बाद दोपहर बाद के कारोबार में अच्छी खासी तेजी बनी। क्या रहे प्रमुख कारक आज की तेजी के पीछे? देखिए मनोज जी, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी जो डेवलपमेंट्स हैं, खास करके जो यूएस रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं, जो ट्रम्प साहब का जो टैरिफ और ट्रबल्स हुई हैं, जो ट्रेड टेंशन्स हैं, उसकी वजह से काफ़ी वॉलेटिलिटी हमने देखी पिछले काफ़ी दिनों में। अभी बाजार जो है भारत में खास करके हमने स्टेबल होता हुआ देखा, क्योंकि अभी जो ट्रेड वॉर है वो ज़्यादातर यूएस और चाइना में सेंट्रिक हो गई है। एक तो 90 डेज का जो पॉज मिला, उसके बाद बाजार ने काफ़ी मजबूती दिखाई है, काफ़ी अच्छी रिकवरी की है। तो आने वाले टाइम में अगर जो नेगोशिएशंस हैं वो एक भरपूर रंग ले लेती हैं, जो गिव एंड टेक है, एक बहुत ही एफिशिएंट रहता है, तो हमारे बाजार और भी मजबूत हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके के अनाउंसमेंट हम ग्लोबल लेवल पे देख रहे हैं, जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, जो खास करके जो मिनरल रिलेटेड अभी अनाउंसमेंट्स हुई हैं कि उनका एक इंक्वायरी करके उनके ऊपर आगे एक्शन होगा, तो वो शायद आने वाले टाइम में बाजारों में फिर एक वॉलेटिलिटी क्रिएट कर दें, जिससे कि पूरी ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि वो किसी के भी हित में नहीं होगा। उससे जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होंगी, प्राइस डिस्कवरी सही तरीके से नहीं हो पाएंगी, ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होंगी। तो लेकिन अभी इस जंक्चर पे जो बाजार है वो काफ़ी हमें मजबूत दिख रहा है। Dr. Sharma, today the FIIs were net buyers to the tune of 6,000 crore rupees. So we have seen the DIIs being net buyers before when the FIIs were in the selling mode. What's the thinking of these hedge funds who are buying into a market once again? Because if you look at the dollar index, typically we look at foreign exchange between dollar and the rupee, and invariably there is always a concern that the rupee is depreciating against the dollar. But over here, the dollar index is 99.62. It's also an asset class. What is the hedge fund manager thinking when they look at emerging markets like India? Are they moving away from the dollar to buy into rupee-denominated shares on Sensex and Nifty? And what is the de-dollarization doing to the thinking of the hedge funds, the FIIs, FPIs, into the emerging markets like India? Yes, Arjun, because 15 days ago, the problem was of the world economy, like the rising tariffs were impacting the global markets and creating volatility in the global markets. But now the problem is now centering to the China and US trade war majorly. So that's why the problem, like if they are imposing the tariffs, high tariffs on each other, then that will impact both the economies, and that impact the severely US economy. Because of the high tariffs, they will face the inflation escalations and slowing manufacturing and impact on the retail segment. Then that's why the dollar is becoming weak against the many currencies or the major currencies like India. India is gaining from that weakening dollar. That's why the gold prices are going up and making new highs. Because it's an asset class which is denominated in dollars. Yes. So that's why the volatility in the global markets is now stabilizing, majorly because of this problem is shifting towards trade war between US and China. And they are imposing high tariffs and announcing that they will impose such type of tariffs and increase more than 200. Or now they are in the mineral war. So trade war is now shifting towards the mineral war. Mineral is important commodity across the world. So that is needed in each and everywhere in the world economy, sometimes in shape of the raw material, sometimes in shape of the exports. So if that mineral war also starts, that will create again a volatile markets in the coming times. But right now, the confidence over US economy is diminishing. Retail segment is also impacted in the US economy. The inflationary expectations are again on the rise,
and the trade tussles are becoming more and more problematic between US and China. So you're talking about rare earth. China dominates. It's a chief supplier of rare earth minerals. US is looking at Greenland for rare earth minerals as well. Tell us about import-dependent sectors like auto, for instance, or telecom. Again, they both use rare earth. Electric vehicles require lithium, for instance. These are rare earths. How do you see these two sectors from the hardware point of view, and autos, which depend upon imports, not only raw materials but finished goods also, parts which exactly they import. because if the mineral war starts and they are in tussle in the mineral segment, that will create the volatility. I earlier said that that will create a severe volatility in the financial markets, because we will be getting some export opportunity to fulfill the demand in the US, but our imports, like we import many raw materials in the mineral segment, so there will not be any price discovery, and prices will be again and again volatile. So that will create problem in the price segment, like the price cost margins of the producers in India will be impacted severely. So in that segment, I don't see that immediate opportunity will happen, but in the medium to long term, if we are able to connect strongly with the global supply chains in the mineral segment, particularly the mineral supply chains, that will benefit India to import at the rational prices and also export So and auto increase slipped to its 0.4%. यहाँ पर एक अहम सवाल ये बनता है कि जो कह लें कि ख़ास तौर से कंप्यूटर बनाने की बात हो, या कह लें कि जहाँ पर ऊंचे तकनीक की आवश्यकता होती है, वहाँ रेयर मटेरियल यानी खनिजों की आवश्यकता होती है, और उसकी जांच की बात की है उन्होंने। और चीन की स्थिति ये है कि 90% दुनिया के कारोबार की प्रोसेसिंग रेयर अर्थ की चीन में ही होती है। तो आने वाले दिनों में हमारे ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है? उसमें मनोज जी, जैसे वॉलेटिलिटी रहेगी, जैसे मैंने बताया कि हम प्राइस डिस्कवरी, प्राइसेस जो है बहुत ही वॉलेटाइल हो जाएंगे, क्योंकि जो इससे क्या होगा, सबसे पहले ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट होंगी। जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होंगी, मिनरल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होंगी, उसके बाद जब रीसेटिंग होगी सप्लाई चेन्स की, तो प्राइसेस के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आएगा। प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल रहेंगे, क्योंकि जो एक प्राइस स्टेबिलिटी है वो नहीं रहेगी, उसमें लॉजिस्टिक्स और ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, जिसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशंस होंगे, और जो इंपोर्टर्स हैं, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू इम्पोर्ट एट स्टेबल प्राइसेस। उनके लिए जो वॉलेटिलिटी है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। So speaking about volatility, VIX India is right now 16. In the US, the volatility index is 31. What would you advise investors in a volatile market? That's the first part of my question. The second being banking. If you look at CPI March, that's at an all-time low, 3.34%. Central bank cut the repo rate by 25 basis points to 6%. Do you expect further cuts? Because today, BankX advanced 1.4%. The bank Nifty went up by 738 points. FII showed a great deal of interest. Do you see bank lending go up substantially more with interest rate cut, hopefully in the future, and that will then boost consumer spending? Yes, CPI is now 5 years low. That is a great development, and CPI is decelerating since the last 6-7 months, from more than 6% to now 3.3%. So this softening of CPI is strengthening the RBI stance of accommodative policy, that is in favor of the consumers and in the favor of the producers. Going forward, we can expect more repo rate cut in the coming times, because now CPI is significantly below 4%. RBI's target is 4% for the current financial year, but now the CPI is decelerating to 3.3%. Again, we can expect some more deceleration. So that will create a great room for RBI to cut the repo rate in the coming times and to support the economy in the quagmire of global headwinds or the global uncertainties.
And secondly, as you rightly said, that banking is gaining from this softening inflation. That is true, that when the inflation trajectory becomes soft, then they have more room to lend more to the consumers and the producers, and that increases their profits also, and their participation in the economy also. So that's why the banking sector is gaining from this development. So What would you overall, advise a small investor in the volatile market? yes, small investors should be very, very patient at this juncture, because markets are going up, but that is not warranted that markets will remain stable at the high level, because as I earlier said that now the mineral wall is also again can impact the markets and create volatility in the system. So at this juncture, I would suggest that retail investors should be very, very patient. They should not enter with the fresh investments in the market, because markets are still uncertain because of the many factors at the global level, like the uncertainties in the inflation trajectory in US, and the settlement of the trade war or the tariffs in US and China, and scenario after 19 days. What is going to happen after 90 days when Trump imposes again the tariff structure to the many economies? My macroeconomic question to you: in this tariff trade war between US and China, do you see a deflationary impact? Because China would be looking to dump its goods in other emerging markets like India. So do you see deflation as something that India will take advantage of because of this trade war in terms of goods? I don't see, because that's not that much easy to dump the goods. Global supply chains disruptions will create the price volatility. And second, we are facing the shortages of containers as the exports are stuck in many countries. So that's why the containers are also occupied by the major exporters like China. So this dumping or the deflationary impact will be nullified by such kind of rise in the logistic cost and disruption in the supply chain. So we can't expect that there will be a severe deceleration in the prices of the commodities. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आइए अब चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है। बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हेंगसेंग सूचकांक 1.9% घाटे में रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.2% की गिरावट हुई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 4 हफ्तों से जारी तेजी के बाद आज 1% नुकसान के साथ बंद हुआ। उधर निवेशकों की खरीदारी से सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1% से अधिक लाभ में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.26% की वृद्धि हुई। चीन से प्राप्त आर्थिक आंकड़ों के अनुसार जनवरी से मार्च के महीने में इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 5.4% रही, जो पहले के अनुमान से कहीं अधिक दर्ज हुई है। आंकड़ों के अनुसार इस दौरान चीन में औद्योगिक उत्पादन और खपत दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यूरोप की ओर चलें तो वहां भी समाचार मिलने तक नरमी का माहौल दिख रहा था। अंतर्देशीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 0.5% घाटे में चल रहा था। फ्रांस के कैक 40 में 0.5% से अधिक की नुकसान बनी हुई थी। उधर लंदन का FTSE 100 भी 0.2% नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। Moving on to the US markets, US stocks ended marginally low on Tuesday amid tariff uncertainty and as investors digested a new round of first quarter earnings reports. The Dow Jones Industrial Average ended over 0.3% down, S&P 500 slipped 0.17%, and the Nasdaq Composite closed nearly flat. Even though immediately the US stock indices are seeing a minor correction, they're calling it a dead cat bounce because of the severe volatility before the extreme selling pressure. Now there is a buyback into the US stock market. But, you know, vis-a-vis China, if we just get away from equity indices and look at the debt market, the 10-year yield has now gone up to 4.3%. US treasuries are being sold by China and Japan. How do you see the bond market impacting the US economy right now? Because they require the selling of bonds in order to finance and fund government and their own enterprise in the US.
Yes, when markets are uncertain and economy is uncertain, and policy environment also becomes volatile, then in that scenario, bond prices goes up and create a great disruption in the market and volatility in the market. So now a different kind of combination is there. Some markets are decelerating, and the dollar is weakening, gold prices are going up. So all the asset classes are in a different mode because total system is confused because of the tariffs, and there is a war between the two largest economies, trade war between the two largest, and both are significant partner in the global trade. One is in the deficit of 1 trillion and second is in the surplus of 1 trillion in the deficit scenario. So different kind of developments or the equations are taking place. So that's why the markets are totally confused. Sometimes they go significantly up and sometimes drastically decelerate. So this kind of combination is, I believe, is very impactful for the retail investors sometimes. Well, if you just look at some more news, this time from the tariff, because we're talking about the tariff trade war. US President Donald Trump's administration has announced sweeping new retaliatory tariffs of up to 245% on imports of Chinese goods, sharply escalating the trade conflict between the two countries. The decision, detailed in a fact sheet released by the White House last night, comes in response to Beijing's recent export restrictions and retaliatory tariffs. The White House, in a statement, emphasized that the move is a part of President Trump's ongoing America First trade policy. It said the new measures were justified under national security grounds. The administration accused China of deliberately restricting vital high-tech materials, elements critical for military, aerospace and semiconductor industries. More recently, China suspended its exports of 6 heavy rare earth metals and rare earth magnets, tightening the grip on components essential to global supply chains. The Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian has responded to the White House's claim that China now faces tariffs of up to 245% on imports to the US. Speaking at a press briefing, Lin asked the US side for the specific tax rate figures. He reiterated China's position, stating that the tariff war was initiated by the US. Lin stressed that Beijing's retaliatory actions are completely reasonable and legal, aimed at safeguarding the country's rights and upholding fairness in international trade. You know, we just read what the GDP figures were for the last quarter, which is at 5.2% for China. How secure is China right now by the tariffs imposed by the US? 245% tariffs US imposed, plus a lot of inflammatory statements also by the president to the Chinese economy and the Chinese government. How do you see China withstanding this tariff trade war? Who is likely to win from this? Nobody is going to win from this trade war, neither China or US, because trade war is not in favor of anyone, not in between the China or US, but other countries also. Nobody is going to gain from end of the day that some countries are gaining or some are losing, because when trade is always for the welfare. You can't create tussles with the trajectory of the trade developments or this give and take. Trade is always efficient. So China will be okay with 5.4% GDP I don't see growth that. No. China's average growth rate for the next 5 years will be at around 4.1%. That is projected by IMF. So this 5.2% is comfortable, but we don't see that this will continue in the coming quarters also, because the anticipation is that China will grow at around 4% in the. If grows at 5%, that also doesn't warrant that China will be a dominating economy in the community, because this trade war is going to impact the Chinese economy very significantly because of the volatility and the losses in the export, because China is majorly export dependent. So this and surplus of the 1 trillion. So if trade war deepens, that will impact the trajectory of exports and surplus of trade in the coming times. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं।
अब चलते हैं सर्राफा बाजार की ओर। हालांकि सर्राफा बाजार की ओर हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में चलते हैं, लेकिन आज थोड़ा पहले, क्योंकि सोना ऐतिहासिक ऊंचाई पर न केवल दुनिया में बल्कि भारत में भी पहुंच चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य पहली बार $3,300 प्रति औंस के ऊपर आज पहुंच गया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका में आयात किए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर नई शुल्क नीति के प्रभावों की आकलन का जांच करने के जो आदेश दिए गए हैं, उसके बाद सुरक्षित निवेश समझकर सोने की खरीदारी बढ़ गई, जिसके कारण मूल्यों में तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पॉट गोल्ड का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 2.4% बढ़कर $3,311 प्रति औंस पर चल रहा था। हालांकि कारोबार के दौरान इसके दाम $3,334 तक पहुंच गए थे। अमेरिका में गोल्ड फ्यूचर का मूल्य 2.3% बढ़त के साथ $3,315 के आसपास समाचार तैयार किए जाने तक चल रहा था। इस बीच घरेलू सर्राफा बाजार में भी सोने का मूल्य 95,000 प्रति 10 ग्राम की ऐतिहासिक ऊंचाई से ऊपर पहुंच गया और अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 1.89% बढ़त के साथ 95,420 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं चांदी लगभग 2% बढ़कर 97,110 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई थी। एमसीएक्स पर जून आपूर्ति वाले सोने का मूल्य 1.96% बढ़त के साथ 95,278 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं मई आपूर्ति वाली चांदी 2.11% चमक के साथ 96,769 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। सोना निसंदेह ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया और श्रोताओं, डॉक्टर शर्मा हमारे ऐसे विशेषज्ञ जो लगातार सोने की चमक तेज होने की भविष्यवाणी करते रहे और उनके कयास बिल्कुल सही साबित हुए। लाख रुपए के आसपास पहुंच रहा है सोने का यह स्तर क्या दर्शा रहा? बाजार में चिंता या सोने के जो खरीदार हैं उनके लिए अभी भी आकर्षण बचा हुआ है? देखिए, आकर्षण सोने के लिए हमेशा बचा रहेगा और मेरे को सोने के इस प्राइस से भी सबर नहीं होता है। मैं हमेशा आई एम ऑलवेज बुलिश ऑन दी गोल्ड प्राइसेस जी, और आगे ये निरंतर चलता रहेगा। वॉलेटिलिटी हो सकती है गोल्ड प्राइसेस में, वी कांट रूल आउट द डीप करेक्शंस, लेकिन इसमें जो नए स्तर हैं वो हमेशा आते रहेंगे, क्योंकि ग्लोबल इकॉनमी अब एक ऐसे जंक्चर पे है जहां पे गोल्ड प्राइसेस की ही सपोर्ट जो है बहुत सारे इकोनॉमीज को अपने एसेट्स को सेव करने के लिए, अपने फॉरेक्स को बचाने के लिए गोल्ड की इंपॉर्टेंस जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो महत्व की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर शर्मा जो हमारे श्रोता हैं, निवेशक हैं, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? सोने में निवेश अब करने का समय है या नहीं, और निवेश करें तो किस रूप में, भौतिक सोने में या फिर कह लें कि जो ETF हुआ करते हैं वहाँ? देखिए, अगर वो पहनना नहीं है तो हमेशा जो इन्वेस्टमेंट है वो तो उसी में होना चाहिए, ETF में हो या फिर बॉन्ड मार्केट में हो, तो इस तरीके से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इस टाइम पे नहीं मैं सजेस्ट करूंगा। अगर कोई करेक्शन आती है, जैसे गोल्ड में कई बार बहुत सीवियर करेक्शंस भी आती हैं, उस टाइम पे वो मार्केट में एंटर कर सकते हैं। Let's have a look at the oil market. Oil prices rose today. Brent crude was trading 0.9% up at $65.25 per barrel. WTI crude was also trading 0.9% up at $61.88 per barrel. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। भारत के वस्तु और सेवा के कुल निर्यात में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की अवधि में बढ़कर 5.5% पर पहुंच गई। इस दौरान कुल 820 अरब 93 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ, जबकि पिछले वर्ष कुल निर्यात 778 अरब 13 करोड़ डॉलर दर्ज हुआ था। दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितताओं के बाद भी निर्यात में यह रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जी शुक्रिया मनोज जी, एंड थैंक यू अर्जुन। Before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic equity indices rise for the third straight session. Sensex closes above 77,000 mark. Nifty gains over 100 points. India's total exports register a growth of 5.5% to hit nearly $821 billion in the last fiscal. And global gold prices surpass $3,300 mark for the first time. Gold prices in India breaches the historic 95,000 rupee mark. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra, Mantra.